हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग में क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम डिक्टेशंस लेते हैं। ये डिक्टेशन जो होती है 2 पार्ट में हमने डिवाइड की है। जिसमें पहले पार्ट में तो हम इस डिक्टेशन की डिक्टेशन लेते हैं जो कि हमारी यूट्यूब पे होती है। लेकिन दूसरे पार्ट में हम जो इसकी रीडिंग करते हैं वो हम गूगल मीट पे करते हैं, जिसमें मैं बच्चों से डायरेक्ट मतलब आप सभी से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता हूँ। आपसे हर किसी से पढ़वाता हूँ और आपके डाउट्स लेता हूँ, या फिर आपके जो इम्पोर्टेंट आउटलाइंस होती हैं जो हम डिफिकल्ट लगती हैं थोड़ी, उनको हम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं अपने इस वीडियो में। तो अगर आप भी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और दिक्कत आ रही है स्पीड बढ़ाने में, आउटलाइंस को मेमोराइज करने में और डिफिकल्ट आउटलाइंस को शॉर्ट करने में, तो आप भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मॉर्निंग में सुबह सुबह होता है। ठीक है। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी पुरानी मतलब वॉल्यूम 1 की डिक्टेशंस, जिसको आप कर सकते हैं, जो बहुत ही कम स्पीड पे, मतलब हमने 50-60 से स्टार्ट की थी, स्पीड 60 से, और वो हमने करीबन 80 वर्ड पर मिनट पे जाके उसको खत्म किया है। वॉल्यूम 2 डिक्टेशन में हमने 75 से 80 से स्टार्ट किया है, जिसको हम अराउंड 90 पे लेके जाके खत्म करेंगे। और ऐसे ही हम हर मैगजीन में अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, अपने वर्ड्स बढ़ा रहे हैं। जैसे कि हमने वॉल्यूम 1 में 400 वर्ड से स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम इसको बढ़ा के 600 वर्ड्स पे आ गए हैं। ठीक है। तो आज इसी की नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है। तो बी रेडी, कॉपी पेन से निकाल लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 24-25। 3, 2, 1, start. Staff might be appointed for him and office space might be provided for him. It is because of this that certain misgivings have arisen in the minds of some of the members, and they want it to be made perfectly clear that the staff will be appointed not only for the ex-president but will be appointed by the ex-president, and it will be his wishes and his desires that will be taken into account when a particular person is being appointed. Also, regarding the office which is engaged for him, his wishes should be taken into account so that he knows why would be a convenient place for him and he made to get that place. Another reason for insisting on what I consider to be an important detail is that if the government appoints the staff for the ex president, then automatically they become government servants because they have been appointed by the government. It may be that in the rules a clarification might be attempted whereby they may be exempted from some of the service conduct rules which are applicable to normal government servants. But even there, it will be much better that this should not be left in any doubt
and that these persons that are appointed to assist the ex-president in his secretarial task are appointed by the ex-president himself. They would be the staff of the ex-president and would not be appointed by the government for the ex-president and would not be government servants. This point ought to be made quite clear so that the ex-president has got all the right of determining the service conditions of the people appointed by him. Of course, subject to the overall limit which has been provided and, to my mind, rightly provided in the bill. Within that overall limit, perhaps it will be much better to leave the rest of the matter to the president himself so that we may also express our further confidence in the president to the effect that he would utilize it with discretion and with all sense of responsibility and fair play and taking into account the interests of the public and of the public exchequer too. Another point which also needs some clarification is regarding the payment to be made for the secretarial assistance and for the secretarial staff. Normally, government rules require that whenever any such demand is made on the public exchequer or on the consolidated fund of India, a certain formality has to be gone through, and that formality of accounting has to be in a prescribed form. Mr. Vice Chairman, first of all, I must place on record my grateful thanks to the University Grants Commission for the work that they have done for the advancement of higher education. They have done good work and in full cooperation with the Education Ministry. This, I think, must be encourage state governments to establish University Grants Commission or committees in their respective states. What the country needs most is the coordinated efforts of the autonomous university grant commissions working in harmony with the state governments and university authorities. Coordinated efforts are needed to bring about certain uniformity in the standards of the university education.
Without that, our educational advancement is bound to suffer from various tensions and difficulties. I do agree with my friend that the annual report under discussion is rather a dull report. At least it is not as bright as the two previous reports were. In the previous two reports, the University Grants Commission invited the attention of the nation to certain academic problems, to certain educational needs. Unfortunately, in this report, the University Grants Commission confines its remarks mostly to what has been achieved in the field of university education under the guidance and with the assistance of the University Grants Commission. However, sir, it is not possible for me to agree with Mr. Santhanam that the University Grants Commission should not extend help to universities for the preservation of manuscripts. Manuscripts are of great importance so far as university libraries are concerned. It is the duty of universities to preserve those manuscripts, and it is the duty of the University Grants Commission to extend to universities the necessary financial assistance for maintaining and preserving the manuscripts in good order. Also, it is not possible for me, sir, to agree with my friend that today universities are enjoying too much of autonomy. I agree with the University Grants Commission, which 2 years ago remarked that freedom is vital for education and democracy. And I personally feel, sir, that on one plea or the other, university autonomy and academic freedom are being restricted rather than being extended as they must be. I do not think, sir, that a social purpose or a social value can be imparted in the teaching by a teacher through the imposition of restrictions on his freedom of thinking. I feel that teachers need academic freedom for discharging their duties in an efficient way. आई होप सबने अच्छे से लिखी होगी। और ये जो हमारी स्पीड थी ये थी अराउंड 75 वर्ड पर मिनट। सो आई होप अच्छे से लिखी गई होगी। मैंने हर एक फुल स्टॉप पे थोड़ा पॉज लिया है। जितने भी हमारे थोड़े से हैवी वर्ड्स थे उनको अच्छे से प्रोनाउंस करने की कोशिश की है
और बहुत ही क्लियर बोलने की कोशिश की है। बट अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको होती है, तो आप बेहिचक मैसेज करके मुझे बता सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, जिसमें रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। तो इसी के साथ हम अपनी ये बैच को खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे कल, ठीक है? मतलब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम डिक्टेशन रीड करने वाले हैं, ठीक है? तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक और बैच चल रहा है, जो कि फ्री गाइडेंस बैच है, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि क्या हमें आज पूरे दिन में पढ़ना है और फिर उसको ट्रैक करते हैं कि हमने उसको कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो कि भाई इस बार तो 2026 में एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो भाई जुट जाओ, लग जाओ, क्योंकि ये समय आ गया है, इट इज़ हाई टाइम बिल्कुल। भाई अब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? इसी के साथ ओके बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही साथ रहिए, ऐसे ही बने रहिए। आपकी सफलता की सीढ़ी तक लेके जाना मेरा काम है, लेकिन मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, ठीक है? मैं सिर्फ़ एक डायरेक्शन दे सकता हूँ आपको, लेकिन उस डायरेक्शन को फ़ॉलो करना है नहीं करना, किस हद तक फ़ॉलो करना है, कितना फ़ॉलो करना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो इसी के साथ अपनी क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।